Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Yasoda Nandana Vrajajana Rajano Yamuna Tiro Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Jayo Radha Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Yasoda Nandana Vrajajana Rajana Bhagavad Gita you need for you. Yamuna Tiro Vanachari for you. Yo Radha Madhava Kunja Bihari Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Sri Chaitanya Manovistam Stapitanya Bhutale Svayam Rupa Kadam Mayam Dadatyeva Padam Tikam Vandeham Sri Guru Syutta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Takanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sutta Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we continue the lecture of chapter 19. हम आज इस कंदनों का अध्याय 19 पढ़ रहे हैं. King Yayati achieved liberation. राजा ययाति को मुक्ति लाभ. Maharaj Yayati, he got attachment with his beloved Devayani. महाराजा ययाति को देवयानी के प्रति आकर्षण हो गया था. It's always attachment because attachment is the tendency of the soul. ये जो आसक्ति है ये आत्मा का ही गुण होता है. It's important to understand this point. We cannot delete the attachment. इस बिंदु को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है. हम इस आसक्ति को नहीं हटा सकते हैं. We cannot delete because it's the tendency of the soul. इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि यह आत्मा का ही गुण है. And that is eternal. और ये हमेशा रहता है. So the perfection is when this tendency is tendency to Radha Govinda, Radha Krishna. यह आसक्ति तब पूर्ण हो जाती है जब राधा गोविंद में यह आसक्ति दिखाते हैं. And the problem is when this tendency is attachment with material energy. जब इस माया जगत के प्रति आसक्ति होती है तो यह एक समस्या बन जाती है. So by Bhakti Yoga practice we can transfer that. तो हम भक्ति योग के द्वारा इस आसक्ति को भावातीत कर सकते हैं. Purification and knowledge. जो ये शुद्धिकरण है इस ज्ञान है. Maybe stop this thing. When the knowledge become realized, vijnana, that become purification. When the knowledge is realized, that become purification. जब इस ज्ञान का साक्षात्कार होता है तो यह शुद्धता के प्रति एक ज्ञान बन जाता है. We speak about vijnana. यह एक विज्ञान हो जाता है. Because jnana, knowledge, yeah, you get many, but we have to realize that. ज्ञानी जो अंदर से बढ़ते हैं सब ज्ञान है. When one realizes जब इसका साक्षात्कार होता है, the knowledge, when one get realization, he become protected. जब यह साक्षात्कार होता है तो हम एक सुरक्षित महसूस करते हैं. Someone who get realization of all this information, he is protected. जब हमें ज्ञान का साक्षात्कार होता है तो हम संरक्षण में आ जाते हैं. Is protected by his realization. ये आत्म साक्षात्कार उसे बताता है. Yeah. So today we will read the text 15. आज हम 15वां श्लोक पढ़ेंगे.
We start by the word in Sanskrit. Yada na kurute bhavam sarvabhuteshu amangalam samadristhe tada pumsa sarvaha sukamayaha dishaha yadana kurute bhavam sarvabhute shamangalam samadriste tada pumsa sarvaha sukamaya dishaha yadana kurute bhavam sarvabhute shamangalam samadriste tada pumsa sarvaha sukamaya dishaha yadana kurute bhavam sarvabhute shamangalam samadriste tada pumsa sarvaha sukamaya dishaha. Yada, when, na, no, urute, do, bhavam, a different attitude of attachment or envy. Sarvabhuteshu, to all living entity. Amangalam, inauspicious. Samadristehe, because of the equipoised. Tada, at the time. Pumsaha, of the person. Sarvaha, all. Sukamayaha, in a happy condition. Dishaha, directions. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. When a man is non-envious and do not desire ill fortune for anyone, he is equiposed. For such a person, all directions appear happy.
चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। al 53. I read again. When a man is non-envious and do not desire ill fortune for anyone, he is equipoised. For such a person, all direction appear happy. जो मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। This is one level of realization. And there is plain, in Bhagavad Gita explains something about in the chapter 1853. Here we read, be purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the object of sense gratification, be free from attachment and hatred. One who lives in a secluded place, who eat little, who control his body, mind, and power of speak, who is always in trance, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful, such a person is certainly elevated to the position of self-realization. अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। Yeah, and this slok is in relation with the slok we read just now in Bhagavatam. When a man is non-envious and do not desire ill fortune for anyone, he is equipoised. For such a person, all direction appear happy. भागवतम में भी इसी के बारे में बताया गया है कि जिस तरह मनुष्य द्वेष रहित रहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। और ऐसा व्यक्ति को सारी दिशाएं सुख में प्रतीत होती हैं। Yeah. So in the purport, Srila Prabhupada say, Prabodhananda Saraswati say, Vishvam Purna Sukhayate. When one becomes Krishna conscious by the mercy of Lord Chaitanya, for him the entire world appear happy and he has nothing to which to hanker. On the Brahma Buddha stage, or the platform of spiritual realization, there is not lamentation and no material hankering. Na sochati na kanchati. तो तात्पर्य बताया गया है
कि प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि विश्वम पूर्ण सुखायते, जब मनुष्य भगवान चैतन्य के अनुग्रह से कृष्ण भावनामृत बनता है तो उसे सारा संसार सुखी दिखता है और उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। ब्रह्मभूत की अवस्था या दिव्य साक्षात्कार के पद पर ना कोई संताप रहता है, ना कोई भौतिक आकांक्षा, ना सोचती ना कांचती। As long as one live in the material world, action and reaction will continue. But when one is unaffected by such material action and reaction, is to be considered free from the danger of being victimized by material desires. जब तक मनुष्य इस जगत में रहता है तब तक कर्म फल चलते रहते हैं, किंतु जब मनुष्य कर्म तथा फल से अप्रभावित हो जाता है तो वह भौतिक इच्छाओं का शिकार बनने के खतरे से बच जाता है। So, sense gratification is a deceptive and sinful activities. जो ये इंद्रिय भोग है ये काफी धोखा देने वाला कार्य है और पापमय है। The symptom of those who are satisfied with lusty desire I describe in this verse. इस श्लोक में उन लोगों के लक्षणों का वर्णन हुआ है जो कामिक इच्छाओं से ऊब गए हैं। As explained by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, when one is not envious even of his enemy, do not accept honor from anyone, but instead desire all well-being, even for his enemy. He is understood to be Paramahansa, and who has fully subject the last desire for sense gratification. जैसा कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है, जब मनुष्य अपने शत्रु से द्वेष नहीं करता, जब वह किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, उल्टे वह अपने शत्रु तक का भला चाहता है, तो वह परमहंस कहा जाता है, अर्थात जिसने अपनी काम वासनाओं को पूरी तरह दमित कर लिया है। So this is the sense gratification is always deceptive activity, deceptive. तो जो इंद्रिय भोग है ये हमेशा धोखा देता है। Deceptive is sinful. और यह धोखा भी देता है, पापमय भी है। That happen by lack of knowledge. That happen by lack of knowledge. तो ये ज्ञान की कमी के कारण ऐसा होता है। When there is not knowledge. जब कोई ज्ञान नहीं होता। And this is the problem, actually, is the problem of all society in the world. This is the problem, no knowledge, no information. तो ये समस्या सबके साथ है ज्ञान के अभाव के कारण। For that, Srila Prabhupada insisted, if you want to please me, distribute book, because it's the only solution to give information for everybody. People have no information. Then think just, I have to work now and I have to get money, and it's completely concentrating material activities. श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर प्रचार करना है तो मेरी पुस्तकों का वितरण करो, क्योंकि लोगों में इस ज्ञान का अभाव है। इस ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से दिया जाता है और वो केवल अपनी भौतिक संसाधनों को ही जुटाने में लोग लगे रहते हैं। There is 3 levels of material consciousness. 3 levels. Yeah. The first, the more down is Annamaya. Another level, little better, Annamaya Pranamaya. And after this Jnanamaya. Jnana is little more. Jnanamaya
is a more high level in material level of consciousness. तो प्राणमय के ऊपर ज्ञानमय ऊपर आती है और यह इस बोले जो Jnanamaya is the best. ज्ञानमय पूर्ण सबसे अच्छी है इन तीनों में Even if his material level of consciousness is the best, but the best. और भौतिक चेतना भी रहता है फिर भी यह सबसे अच्छी है Because in this level of consciousness, in Jnanamaya, the person start to ask, I want to know something about God. क्योंकि ज्ञानमय चेतना में एक व्यक्ति यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है कि भगवान कौन है Everyone here, everyone was in this level of consciousness. तो यहाँ उपस्थित जो भी लोग हैं वह ज्ञानमय चेतना में हैं For that we are in Krishna consciousness. तो यह हमें कृष्ण भावनामृत में सहायता करती है After sense gratification and suffering and happy and unhappy, one day one asks, okay, I want to know something about the spiritual life. तो लोग जो दुख झेलते हैं कभी भी प्रसन्न रहते हैं इंद्रिय भोग करते हैं तो एक दिन ऐसा समय आता है कि वह इस आध्यात्मिकता के बारे में जानना चाहता है And start to look for information, purchase some book, something like that. तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को खरीदता है In the bookshop is plenty of different kind of spiritual book. और एक जो किताबों की दुकान में कई आध्यात्मिक विषय से संबंधित कई किताबें मिल जाएंगी Most of them are boga. और जो बहुत वो Yeah. जानी है Because there is, in Kali Yuga, there is many false gurus. क्योंकि इस कलयुग में बहुत से जाली और पाखंडी गुरु हैं And everyone writing something about spiritual realization. सब लोग इस आध्यात्मिकता के जो साक्षात्कार है तो उसके विषय में लिखते रहते हैं Me also, when I was young, I reading book of these gurus. जब मैं युवा था तो मैं भी इस तरीके के जो गुरु होते हैं उनकी पुस्तकें पढ़ता रहता था That mean at that time I was in this level, Jnanamaya. मैं भी उसमें ज्ञान में स्थिति में आने का प्रयास कर रहा था Because in Jnanamaya, one start to understand by Anamaya is just the more strong impetus is to eat Anamaya. जब हम अन्नमय चेतना में होते हैं तो हमारा हर प्रयास खाने के प्रति ही रहता है The only problem is I must do it tomorrow. I need some money. हमारा हर प्रयास रहता है कि मुझे कल कुछ खाने के लिए मुझे कुछ पैसा कमाना पड़ेगा It's the more strong impetus to eat. तो बस हमेशा Then think the problem is to have something to eat. तो समस्या ये कि कुछ ना कुछ चाहिए मैं खाने के लिए And this level of consciousness completely down. और यह है कि निम्नतर स्तर है Yeah. But after then went to the level of pranamaya. जब हम प्राणमय चेतना के स्तर पर आते हैं In pranamaya, the more strong impetus is to defend himself. और प्राणमय चेतना में हम स्वयं की सुरक्षा करते हैं अपने आप को बचाते हैं Everybody have one house, everybody have one family, everybody has some money, and myself. तो स्वयं की सुरक्षा करने के लिए हम अपना एक घर बनाते हैं परिवार बनाते हैं धन कमाते हैं And this is also the very down level. It's better as Annamaya, is superior to Annamaya, but it's also down. तो यह चेतना अन्नमय से तो भले ही ऊपर है फिर भी यह एक नीचा स्तर है But after years working and thinking about how to eat, how to defend myself, one start to understand must to be something else, must to be something better, must to be something true.
तो सालों साल इस तरह इस चेतना के स्तर पर रहने पर हमें समझ में आता है कि इससे भी कुछ ऊपर होना चाहिए, तो वो इस बारे में जिज्ञासा करने लगता है। And this is the level of Jnana Maya. तो इस चेतना को ज्ञानमय चेतना के स्तर कहा जाता है। By the mercy of the Lord, one reaching this level. तो भगवान की कृपा से, उनकी दया से हम इस स्तर पर पहुँचते हैं। So one desire to know something about. Something about God, something about self-realization, something about spiritual activities. तो भगवान आत्म साक्षात्कार और उसकी गतिविधियों के बारे में जिज्ञासा करने लगता है। Yeah, many people come in our international society for Krishna consciousness, then come by this level of Jnana Maya, they want to know something. बहुत से भक्त जो कृष्ण भावनामृत संघ में आते हैं, वो ज्ञानमय चेतना के कारण नहीं आते, क्योंकि वे कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासा करना चाहते हैं। Yeah, this is the best level. ये सबसे उच्च स्तर है। For that, in this level of consciousness, people need information. इस चेतना के स्तर पर व्यक्ति तथ्यों को जानना चाहता है। For that, Srila Prabhupada insisted, if you want to please me, distribute the book, distribute the book, distribute the book. श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, अगर प्रचार करना चाहते हो तो पुस्तकों का वितरण करो। Yeah, because ignorance is one level of one cap of contamination. तो ये जो अज्ञानता है, अशुद्धि का एक covering of contamination. तो एक जो अज्ञानता है, अशुद्धि की एक परत है। Ignorance. अज्ञानता। And in Kali Yuga, the most of people are with this problem. Annamaya and Pranamaya, nothing else. कलियुग में अधिकतर व्यक्ति इस अन्नमय और प्राणमय चेतना में ही रहते हैं। And everybody think I am okay. और सब लोग सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ। Yeah. For that we say this deceptive sense gratification is deceptive activities. इसलिए हम कहते हैं कि जो ये इंद्रिय भोग है, धोखा देता है, धोखा देने वाला है। Cheating yourself. हम खुद को एक धोखा दे रहे हैं। Yeah. So this is one. Ignorance is one covering of contamination. तो जो ये अज्ञानता है, ये अशुद्धि की एक परत है। Other cover of contamination is false ego. दूसरी जो एक परत है, वो एक मिथ्या अहंकार है। Identification with the body. अपने शरीर से पहचान बनाने। Aham mameti. I am the body. अहम ममेति, मैं केवल मात्र शरीर हूँ। This is also by ignorance. यह भी अज्ञानता के कारण ही है। False ego. मिथ्या अहंकार। Yeah. The mind carried this concept, false ego. मन क्या है, वो सहायता करता है इसमें मिथ्या अहंकार को बनाए रखने में। And another covering of contamination is envy. जो अशुद्धि की दूसरी परत है, उसको ईर्ष्या कहा जाता है। The text of today we read, when a man is non-envious. आज का जो श्लोक है, वो बताता है कि जो मैं है, वो द्वेष में रहता है। Because envy is also one covering of contamination. तो जो ये ईर्ष्या द्वेष है, ये भी एक अशुद्धि की परत है। Sometimes there is war by envy. कभी-कभी जो ये ईर्ष्या इसके द्वारा युद्ध होता है। Sometimes it's fighting by envy. कभी-कभी इसके द्वारा हमारी लड़ाई होती है। Envy is like fire. जो ईर्ष्या है, ये आग की तरह है। The burn the heart.
ये हमारे हृदय को जलाती रहती है। It's horrible. Envy is horrible. ये बिल्कुल बहुत ही भयानक है। And everyone got some experience about. सबको इसका एक अनुभव है। But Bhakti Yoga is like fire भक्ति योग भी एक अग्नि की तरह है that burn all the anarthas. जो ये सब प्रकार के अनर्थों को जला देता है, भस्म कर देता है। And material attachment is another covering of contamination. जो भौतिक आसक्ति है, यह भी एक अशुद्धि की फर्क है। And material consciousness is also covering of contamination. और जो हमारी भौतिक चेतना है, ये भी हमारी अशुद्धि की फर्क है। दैवी ही एषा गुणमयी मम मया दुराध्याया ममेवा ये प्रपाद्यन्ते मया मेत्तं तरन्ति ते. Krishna say, by surrender to me you can overcome all this contamination. तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अगर मेरे शरणागत होगे तो ये जो समस्त प्रकार की शुद्धियां हैं उसको तुम पार कर सकते हो। It's the only solution. यही केवल मात्र एक समाधान है। So when a man is non-envious and do not desire infortune for anyone, he is equipoised. For such a person, all direction appear happy. तो जब मनुष्य द्वेष रहता है और किसी का बुरा नहीं चाहता है और समदर्शी होता है तो उसको सारी दिशाएं सुख में प्रतीत होती हैं। Happy and unhappy, that is always in the material world. Yeah. सुखी रहना दुखी रहना ये भौतिक जगत का एक लक्षण है। Happiness and suffering, then travel together in the material world. और ये जो सुख दुख है हमेशा चलते रहते हैं इस भौतिक जगत में। Because it's the world of the duality. It's the world of the duality. क्योंकि यह एक duality का संसार है। Yeah. The people with ignorance then want only happiness. They don't understand, then come together. Happiness, distress coming together. They don't understand. When the person born, what is the first thing he do? जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो पहली चीज क्या करता है? वह रोता है, चिल्लाता है। When the baby born, the first thing he cry. जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह रोता है। If he don't cry, that means he is inconscient. So the nurse take him by the leg and give one bluff, one clap. अगर वो बच्चा नहीं रोता है तो नर्स क्या करती है उसको उल्टा टटकाकर उसको पीछे से एक चपात लगाती है ताकि वह रोना प्रारंभ करे। So if he is alive, he cry. अगर वो जिंदा रहेगा तो वो चिल्लाएगा। If he don't cry, that means he born dead. अगर वह इतना करने पर भी नहीं रोता है तो वह मृत माना जाता है। And this is the welcome to the material world, one clap. तो यह हमारे इस भौतिक जगत में स्वागत है, एक चपात लगाकर। This is the welcome. Everybody cry. Coming, born and cry. First thing, cry. तो यह इस भौतिक जगत का स्वागत है, आइए और चिल्लाइए। Yeah, after people give bath and take with cotton and perfume, and he come in Maya, no? He feel I'm happy now. जब वह माया में आ जाता है तो अपने शरीर को कई प्रकार से सुशोभित करता है, आभूषण परफ्यूम ये सब लगाता है, माया के ज्ञानता में आ जाता है। That is always during your permanence in the material world, you will experiment always the Trisul of Durga.
तो इस भौतिक जगत में हम जो भी करते रहते हैं, जो 3 शूल हैं दुर्गा के, वो हमेशा हमें प्रताड़ित करते रहते हैं। Adhyatmika klesha, adhivautika klesha, adhidaivika klesha. This is the Trisul of Durga. तो जो ये 3 क्लेश हैं, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश, ये दुर्गा के 3 शूल हैं। And everybody is touched by the Trisul of Durga. और कोई भी इनसे बचा हुआ नहीं है। More or less, but everybody is touched by the Trisul of Durga. अधिक से अधिकतर लोग इन 3 शूलों से प्रभावित रहते हैं। Someone suffering more, others suffering less. कुछ ज़्यादा प्रताड़ित हैं, कुछ लोग कम। Someone cry, others don't cry, but everybody is suffering. The jail of Durga, there is always suffering. तो इस माता दुर्गा के कारागार में सब लोग दुखित हैं, कोई थोड़ा दुखी हो सकता है, कोई अधिक, लेकिन सब लोग इस 3 शूलों से दुखित हैं। And the mind is the responsible of all body activities. और जो ये मन है, वो एक भावाधार है इन सब प्रकार के दुखों का। We born again by mind activities. तो जो ये मन के कारण, इसके कारण में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The mind without occupation is the office of the demons. तो खाली मन एक दाना और दैत्यों का एक वर्कशॉप होता है, कार्यशाला होता है। When the mind have no occupation, is the office of the demons. तो जो मन है, खाली मन, एक शैतान का घर कहा जाता है। There is in chapter 18 Bhagavad Gita 18:38 that happiness which is derived from contact of the sense with the object and which appear like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion. तो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में बताया गया है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य होता है, वह रजोगुणी कहलाता है। And the purport of the Prabhupada say, a young men and young women meet, and the sense drive to young men to see her, to touch her, and to have sexual intercourse. तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है, तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। In the beginning, this may be very pleasing to the sense, but at the end, or after some time, it becomes just like poison. प्रारंभ में यह इंद्रियों को अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विषतुल्य हो जाता है। They are separate or there is divorce, there is lamentation, there is sorrow, etc. तो तब वे विलग हो जाते हैं, तो उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। Such happiness is always in the mood of passion. तो यह जो सुख है सदैव राजसी होता है। Happiness derived from a combination of the sense and the sense object is always a cause of distress and should be avoided by all means. जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some question about this argument. क्या किसी का कोई प्रश्न है आज से कक्षा से संबंधित? Maharaj Yayati, he was attached by sex enjoyment. जो महाराज ययाति हैं इस इंद्रिय भोग के कारण आसक्त हो गए थे And he never was satisfied. और वह इससे कभी संतुष्ट नहीं हुए. This is why we say the sense gratification is a deceptive activity. इसलिए हम कहते हैं जो ये इंद्रिय भोग है ये धोखा देने की प्रवृत्ति है. One thing next time will be better. Next year will be better. हम सोचते हैं कि अगली बार या अगले साल हम बहुत बेहतर हो जाएंगे. We can see that when we reach on the end of the year, no? everybody make feast, festival. This year finish. Next year will be. लोग क्या करते हैं जब साल का अंत होता है तो उत्सव मनाते हैं कि चलो जैसे जैसे ये साल गया अब अगले साल हम देखेंगे. The new year is starting after 1, 2, 3 days. Everybody is in the same trip. Go to work and eating, sleeping, defend his head. So the only solution is to change the aim. The aim must to be spiritual. तो फिर अगले साल जब प्रारंभ होता है तो फिर उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना. लेकिन अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो केवल हमारा एकमात्र आध्यात्मिक अपना पथ पर आना ही एकमात्र समाधान है. Yeah. This is the level of Jnana Maya. Jnana Maya. यह एक ज्ञानमय चेतना का स्तर है. When we start to get instruction and we follow the instruction. जब हमें ये आदेशों का पता चलता है और हम उनका पालन करना प्रारंभ करते हैं. In this moment we take the way of liberation. तो ये हमें मुक्ति की ओर ले जाता है. Appavarga is the way of liberation. तो ये जो अपवर्ग है हमें मुक्ति के दिशा की ओर उन्मुख करता है. Appavarga. Pavarga is material entanglement. और जो पावर्ग है वो हमें इस भौतिक आसक्ति में बनाए रखता है. And Appavarga is the way of liberation. और जो अपवर्ग है वह मुक्ति का एक साधन है. When you understand He is the enjoyer and I am the servant. जब हम समझते हैं कि जो भगवान है वो है एक एंजॉयर और हम उनके दास हैं. And you start to act like servant. No anymore imitate Krishna. और हम भगवान कृष्ण की नकल करना बंद करते हैं और उनकी सेवा करना प्रारंभ करते हैं. In this moment you are in the way of Appavarga, the way of liberation of all material entanglement. तो हम इस तरह अपवर्ग के पथ पर आ जाते हैं और मुक्ति की ओर उन्मुख होते हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some questions.
Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Taigur Premanande.